Assalamu alaikum kids. I hope you all are fine. So before starting my today's lesson, I would like to give a brief recap of the previous lesson. In my previous lesson, I have discussed some tools regarding the paint. And I'm very happy to receive some beautiful projects from different classes 3A, 3B, and 3C. In our last lesson, we have discussed the tools magnifier, font, color picker, fill with color, eraser, and pencil. And besides that, I told you how to make a drawing. We have made the house and the tree. I can show you this. And then I colored it up. So today's lesson, we will move forward. Okay, now let's start with the resize tool. We use the resize tool to make the objects bigger or smaller. हमारा जो object है उसका size अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए या थोड़ा small हो जाए, so we can use the resize tool. We can skew an object in the picture so that it appears slanted. To resize the whole picture, we select the image group, drag the pointer to select the area or the object, and then click resize. Just like I will select the whole picture by using the select A, and then I will go to the image, view, zoom, large size. So you can see I have increased its size, zoomed it. If I want to back in its original condition, I'll do the same, zoom, normal size. That's it. To skew the selected area in degrees, we type the number in horizontal and vertical boxes and then click OK. Okay जी, आपने अपनी पिक्चर को थोड़ा बहुत देखना है कि हमने इसको किस तरफ से करना है, वो भी हम कर सकते हैं. Just like this. रोटेट बाय एंगल अगर आपने बताना है 180 डिग्री या 270 डिग्री कर लें. तो ऐसा हो गया. फिर आप गए, फिर आपने वर्टिकल किया, ऐसा हो गया. स्क्यू भी कर सकते हैं. दिस इज अ स्क्यू ऑप्शन और आप इसके अंदर बता सकते हैं. लेट मी डू इट फॉर यू. एक सेकेंड. इमेज स्क्यू, ये मैं बता सकती हूँ कि मैंने अपनी इसको कितने डिग्री से बढ़ाना है. हॉरिजॉन्टल में कर लूंगी 30. तो ये थोड़ा सा आपने देखा 30 डिग्री से मूव हो गया. वर्टिकल पे मैं करना चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ. ओके, नेक्स्ट. When we make changes in a picture, we edit it. Obviously, we can copy the image, delete it, cut it, paste it elsewhere. For example, I want to cut this. So मैं इसको ऐसे drag करूंगी और यहाँ से मैं इसको cut कर दूंगी. Okay? अगर मैंने इसको यहाँ से, इसको विंडो को मैंने यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ से कॉपी किया. What I will do, यहाँ पे पेस्ट कर दिया. मैं कहीं से भी आके I can take a copy and paste anything from one place to another place. Okay, so it will help me out. Next, if we want an image to appear several times,
We click select in the image group and then drag the pointer to select the image we want to copy. I've already told you मैंने window वहां से उठा के वहां copy की. मैं इस तरह बहुत सारी जगहों पे window को copy paste कर सकती हूँ. We click paste as many times as we want to position the image by dragging them like the picture. Just like ये window मैंने यहाँ ये मैंने window यहाँ से copy की. मैंने इसको यहाँ पर लाकर paste किया. यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आती हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे लाके मैंने paste किया. मैं चाहती हूँ मैं further इसको करती जाऊँ. So it depends on me how many times I want to copy it and I want to paste. I hope you are getting all the concept. That's why my speed is very slow today because I want you to give the practical experience. I want to fill the sky with the stars. Okay, G. This is the picture on page number 50 of your book. Add as many stars as you like to this picture and color it. Okay, जी. अब आपने क्या करना है? पेंट पे आना है. न्यू फाइल ओपन करनी है. सबसे पहले what you will do, you will draw the water first. बल्कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि बोट बना ले तो बेहतर है. This, I'll select the pencil. This, now I'll draw the line. This, ये line मेरी थोड़ी सी खराब हो गई है, so I will erase this line and draw it again just like this. Okay, so I will erase the rest of the area that is useless. I know students, you are enjoying this because paint is one of the most enjoyable lesson. ये जो आपका थोड़ा सा gap आया है, you can cover it up with your pencil. Okay. So this is a small box and I can make that. Okay. So this is the board, a sort of board. And now you can draw the stars with the help. Okay. And you can draw the water too. Tick, 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 tick. Yes. You can draw the moon too. यहाँ पर करके. What I can do, सबसे पहले मैं एक ऐसा पॉलीगॉन सा बनाऊंगी. उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये फ्री हैंड मैं ले लूंगी और इसको यहाँ से लाकर ये मून बनाऊंगी. बाकी का जो होगा इसको मैं अरेज कर दूंगी ये चीज. ठीक हो गया जी. Now what I will do? अब उसने कहा है add as many stars as you like and color it. First of all, I will make a lot of stars. And you will also draw a lot of star in this picture. Even you can do this on your book, but I will really appreciate if you will practice it on the paint. Now I will color it. I will select the fill with color and I will color the water. ये तो सारा हो जाएगा because सबसे पहले I will color the board first. I will select the brown color. Tick, tick, tick. Okay, G. Now you can color the whole. वाटर कर सकते हैं आप इसके अंदर, कुछ ऐसा कर सकते हैं. इसको करने का तरीका ये है कि आप इधर से इधर एक लाइन लगा लें, इधर से इधर एक लाइन लगा लें and draw the color.
Okay, so you can color it up, you can draw the stars, etc. That's all for today's. I hope you have got all the concepts, and I will be sharing the classwork after this video. Thank you, everyone.